Morning, everybody. Morning, sir. Good morning, sir. Morning. Morning. How do you read me? Loud and clear. Okay. Loud and clear. Okay. All right. Any doubts so far from exercise 15, the chapter on KM? Any Sir, doubts? question number 8, sir. Question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में वो नहीं डाउट किया 8 करवा दीजिए एक बार 8 में क्या डाउट है? What is the doubt? सर उसके अंदर वो ड्राफ्ट नहीं दिया हुआ है और उसका अंडर वाटर जो है वो ट्रायंगल के बीच में है ठीक है. तो similar triangles करके you will have to find the breadth at the water plane. So, question number 8. Question number 8. So, a barge is shaped like a triangular prism, 20 meters broad at the top. So this is a triangular prism. This is a triangular prism. This is the keel. This is 20 meters broad and 10 meters deep. 20 meters broad and 10 meters deep. 10 meters deep. Okay. It is 45 meters long. So, this keel length 45 meters है. और displacement is 2952 tons. We have to find the km in salt water. Draft is not given. So let it float at a certain draft. So this is the water surface. Let it float at draft D. Let it float at draft D. So let's give some names now. P, Q, R, S, T, U. Okay. This is the center of buoyancy. KB. So underwater volume W is equal to underwater volume into density. So underwater volume is equal to 2952 divided by 1.025. So how much is the underwater volume? How much? 2880. 2880. So many cubes is the underwater volume. Now, underwater volume is equal to
the area of the triangle underwater into the length. Area of the triangle underwater is half into SU into D into 45. So SU into D is equal to something. How much is that? सर इसको ऐसे कर सकते हैं क्या 120. 20/10 is equal to SU/D. अभी आ रहा हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ. Let me just come. हाँ जी, कितना आता है ये? 128. 128 सर. 128. SU into D is 128 meter square. Okay. Now, triangle KPR is similar to triangle KSU. दोनों similar triangle हैं, बड़ा triangle and छोटा triangle. Therefore, the ratio of their sides will be equal. Perpendicular over base KQ over base PR is equal to KT perpendicular over base SU. KQ upon PR is equal to KT upon SU. Perpendicular over base is equal to perpendicular over base. The ratios are the same. So KQ is 10. PR is 20 is equal to KT small d upon SU. So therefore SU is equal to 2D. Replace this in this one. Yes sir. Therefore D square is equal to 64. 2D into D is equal to 128 or D square is equal to 64 or D is equal to 8. D is equal to 8. So if D is equal to 8, so now you draft आपके पास आ गया है KB will be equal to 2/3D. 2/3 from apex, 1/3 from base. So KB is 2/3 into 8. ये कितना आता है? Five 5.33. हाँ जी. Yes, sir. 5.33. 5.33 sir. 5.333 meters. Okay. BMT is IT by V is equal to LB cube upon 12V. Moment of inertia of the water plane. The water plane is a rectangular water plane about SU. So this is the water plane that we are. Yeah.
This is the water plane that we are talking about. No. Okay. So this is the axis that we are talking about. This is the side about which we are taking this thing. So D is 8. So SU is twice into 8 is equal to 16 meter. क्यों? मेरे को कैसे Please put your mics on. Please put your mics on mute. नहीं होता है? अब Please बता put your mics on mute. बता रहे हैं फैमिली वीडियो कॉल करके बता रहे हैं. So SU is the breadth, which is 16 meter. Length is 45 into 16 cube divided by 12 into underwater volume 2880. So find out BMT. 0.333. 0.333. 0.333 meters. Okay. So KMT will be 5.333 kb plus 0.333 is equal to 5.666 meters. ये KMT है. Is that okay? नहीं सर ये 10.666 आएगा सर. ये BMT. हाँ सर ये हाफ होगा ना इसका सर इसमें. सर 5.63 आएगा मतलब ये BMT. v square upon 5.333 आएगा सर BMT. 5.333. 5.333. Okay. सर ये ट्रायंगल के लिए bm v square upon 6d होगा ना. B square by 60, correct. That's right. Triangle will be B square by 60. सर ये BM में डायरेक्ट ही हम लोग लिख सकते हैं ना, B square by 12d और उससे निकाल सकते हैं. B square by 12d करोगे तो गलत हो जाएगा. सॉरी Principal error हो सर जाएगा. 60 B square by 60 ट्रायंगल में. अगर B square by 60 करते हो तो ठीक है. तो ठीक है. 60 सर वो 6 इसलिए करते हैं क्योंकि हाफ उसका सर जो होता है. हाँ. Triangle is half of a rectangle. So that's why. Half of a cuboid. So that's why. ओके सर. Any other doubt? Any other question? Okay, we're coming on to question number 15. Coming on to question number 15. Question number 15 कहता है a homogeneous log of a square cross section. So RD of log is 0.72. So there is a homogeneous log of a square cross section. So square है. ये ऐसे है. हाँ जी, क्या हो गया? What happened? सबके लिए? Is the video blurred for everyone? नहीं सर सही है सर. ओके सर ओके. ठीक है सर ठीक है. So जिसके लिए blurred है, you can just log out and then log in once again, please. सर इसमें ये वन साइड पैरेलल का मतलब सर क्या हुआ? वन साइड पैरेलल. अभी आ रहा हूँ. Let me I'll just come to the question. So when we say
prove by calculation whether it can float with one side of the square parallel to the waterline. तो अगर ये मेरी waterline है तो I have to prove that this side will be parallel to this. मतलब I have to prove this will float upright and will not fall to one side. Because if it falls to one side, if it falls to this side, then the waterline will not be parallel to the side. So I have to prove that it will float upright. That is what I have to do. So let the draft be delta. Let the side of the one side of the square be x. So then the other side of the square is also x. So this is Bravo KB. Let the length of the log be L. So volume of the log will be L into X into D. This will be the underwater volume of the log. KB of the log will be how much? D by 2. D by 2. One thing I have to note that the data given to me in this question is very less. खाली एक ही डेटा दिया है मुझे. जब भी क्वेश्चन में डेटा कम होगा इसका मतलब है क्वेश्चन मेरे को बेसिक्स में टेस्ट कर रहा है. It is going to check me on my basics. So I have to be careful of that. So KB is D by 2. BMT is IT by V is equal to B square by 12D. Breadth is X, so X square by 12D. I know KB plus BMT is equal to KG plus GMT. Therefore, GMT is equal to KB D by 2 plus BMT, that is X square by 12D, minus kg. Kg will be x by 2. Why? Because it's a homogeneous log. Homogeneous का मतलब है the mass or the weight is evenly spread. So kg will be x by 2. So I have an equation here. This log will float upright when the GMT is greater than equal to 0. She will float, that means she is positive. In other words, what I am trying to say is D by 2 plus x square by 12D minus x by 2 should be greater than equal to 0. The log will float upright. Or in other words, I am trying to say that the GMT is equal to this.
I've got this equation, I've got two variables, x and d. If I have to solve this equation, then I must have another equation with two variables. Then I can सर solve ये x क्या है? सर x क्या है? one side of the square. सर वो तो सर जब The breadth, ओके सर one side of the square is x. So ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया. ये kg को सर x by 2, can you just explain that part, sir? The question says it's a homogeneous log. Homogeneous log means the mass or the weight is evenly spread across the length of the log. So kg will be x by 2. So I need another equation with these two variables, x and d. Then I can solve it. So सर that, इक्वेशन ले for that I have जो to लिखा go है back to आपने my जीएमटी basics. ट्रांसवर्स /2 वाला सर क्या हुआ? ऊपर ही। तो सर आपने इसे इक्वेशन को लिखा था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, Correct. तो उसे फिर जीएमटी ट्रांसवर्स इक्वल टू कैसे लिखा सर आपने? यार ये तो यहाँ से लिया ना, ये कि अगर मैं के जी एम टी इधर रख दूं तो के जी उधर ले गया तो क्या बनेगा मेरा? के बी प्लस बी एम टी इज इक्वल टू के एम टी एंड के एम टी इज इक्वल टू के जी प्लस जी एम टी. मेरे फॉर्मूलेज थे ना बेसिक्स जो पहले दिन वो हमने तो सर किया लिखा था, है पहले आपने। तो वही मैंने कर दिया ना. ओके सर। करेक्ट or not? This is derived from here only ना, सेम उसी को दोबारा लिख दिया मैंने. हाँ सर वही दोबारा लिखा था वो पहले वो। ये नीचे लिखा था इसको ऊपर कर दिया, दोबारा सेम लिख यस सेम ओके। सेम ही चीज को कर दो. So I have to make one more equation. So one more equation is weight of the log is equal to the weight of water displaced by it. Weight of the log is equal to the weight of the water displaced by it. Basic principles of flotation. So volume of the log into RD of the log is equal to underwater volume into density of the water in which he is floating. Volume of the log, length into breadth into height into RD of the log, 0.72, is equal to the underwater volume, length into breadth into draft into density in which she is floating. Assume salt water. Length LX cancels. You get x is equal to something d. Find out that something. वन हाँ जी, 1.4236 4236 को मैं 4 कर देता हूँ तो 1.424 d. ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई with relationship between x and d. Substitute this in number 1, this equation.
So GMT is equal to d by 2 plus 1.424 d whole square divided by 12d minus 1.424 d divided by 2 is equal to 0.5 d plus something d minus something d is equal to something d. कितना आता है GMT? माइनस में आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 0.093 0.093. बाकियों का क्या आ रहा है भाई? ये तो कुछ गलती लग रहा है मुझे, ये कुछ वैल्यू में सर कुछ माइनस में आ रहा है, माइनस माइनस 0.043 हाँ अब ठीक है 0.0 चेक करो, जरा चेक करो कि गलत क्यों आ रहा था. दिस इज करेक्ट. सबका सेम आ रहा है. यहाँ पे डी स्क्वायर और डी एक कैंसिल हो जाएगा तो खाली डी बचेगा. तो 1.424 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 कर दो, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी. और यहाँ पे 1. राइट कितना आता है? 0.1690. 0.169d. तो ये 0.169d बन गया. 0.169d. और यहाँ पे 1.424 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 0.712 डी हो जाता है. उसका रिजल्टेंट निकाल दो तो ये आ जाएगा. नाउ यू राइट डाउन सिंस GM is negative. Since GM is negative, the log is in unstable equilibrium. So can you please repeat? Since the GM is negative, the log is in unstable equilibrium. Hence, the log will go to an angle of Loll. And will therefore not float with one side of the square parallel stroke
perpendicular to the water line. So can you repeat last sentence? The log will not float with one side of the square parallel stroke perpendicular to the water line. पैरेलल में ये साइड की बातें कर रहा है, परपेंडिकुलर में ये साइड की बात कर रहा है. The same question could have been framed in another way. Prove whether it can float with one side of the square perpendicular to the water line. Answer is the same. It will not float with this side of the square perpendicular to the water line. It will not float with this side of the square parallel to the water line, because it would have gone to an angle of Loll, because the GM is negative. Is that okay? समझ आ गया क्या नहीं? Is this understood by everybody? Yes, sir. Okay. Now you add one more part to this question. It's not there in this question, but you add another part. So part B to this question. Calculate the angle of Loll. Calculate the angle of Loll. Calculate the angle of Loll. So let's start to calculate the angle of Loll. Formula for angle of Loll. Tan theta is equal to under root minus 2 GM upon BM is equal to under root minus 2 GM minus 0.043D अपॉन BM. BM की वैल्यू ये थी, ये आपने निकाली 0.169D. DD कैंसल्स. फाइंड आउट इसका स्क्वायर रूट एंड उसका tan इनवर्स कर दो. $35.5. 35.5 degrees on either side. So किसी भी साइड जा सकता है ये. Basically this log can fall on either this side or this side. So on either side. And it'll go to an angle of Loll of 35.5 degrees. ये इसकी वो angle of Loll होने वाला है. ठीक है? Is this okay with everyone? So a question with very less data given कैसे गोल घूमता घूमता पहुंच जाता है basically. इस क्वेश्चन के वेरिएशंस आपको पास्ट पेपर में मिलेंगे और फेज 2 में भी मिलेंगे इसके वेरिएशंस जो अभी हमने करा. काफी इसके वेरिएशंस हैं, बट दे आर ऑल देयर. फेज 2 में भी आते हैं, फेज 1 में भी आते हैं. तो बट बेसिक फंडा ये रहेगा.
Now, looking at this, you can do exercise 19. That is chapter 21 ke questions. In the same manner. Angle of Loll, chapter. So, there are 6 questions given in exercise 19. You can do that at homework. Okay? So please do chapter Angle of Loll. That is exercise 19. You can do all the questions. Question number 1 to question number 6. You should be able to do them now. Okay. There is one more question which comes as a theory question. Also a very popular orals question. Theory में तो काफी popular है. That is, this is the question. You are a mate of a vessel of a general cargo ship. General cargo vessel. Vessel is at sea. Vessel is at sea. And one fine morning, you find the vessel has got a list of 15 degrees to starboard. Are you in a dangerous situation? Are you in a dangerous situation? What action will you take? Sir, repeat the question, sir, please. मैंने क्वेश्चन लिख दिया पूरा का पूरा. You are a chief officer. You are a mate of a vessel. It's a general cargo vessel. Your vessel is at sea. One fine morning, you find the vessel has got a list 15 degrees to starboard. Are you in a dangerous situation? What remedial action will you take? सर अगर एकदम से लिस्ट हुआ है 15 डिग्री स्टारबोर्ड तो मतलब कुछ ना कुछ तो डेंजरस मतलब गलत है ही है. बिल्कुल बात है. तो सबसे पहली बात तो ये है कि सर जरूरी नहीं है, सडन हो. जरूरी नहीं है सर डेंजरस सिचुएशन होगी, जरूरी नहीं है सर. भाई सडनली तुम्हारी लिस्ट हुई है, तुम्हारी तो इट्स नॉट अ डेंजरस सिचुएशन. एंगल ऑफ लोल 15 डिग्रीज बहुत ज्यादा है सर, लेकिन बट सडनली डिपेंड्स अगर अपॉन तुम्हारा एंगल ऑफ लॉल एंड अभी 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 एंगल ऑफ लॉल पे तुम सीधा जंप नहीं कर सकते ना. अभी तो पहले तो ये तो है कि ऑल ऑफ व्हेन यू डिपार्टेड फ्रॉम पोर्ट यू वर अपराइट. टुडे मॉर्निंग आल्सो यू वर अपराइट. ऑल ऑफ अ सडन यू हैड अ लिस्ट. So there is something wrong. Just gone. Mr. Bell, what is the cause of list? That is for sure. First There you is find something out the wrong. cause of the list. So first you have to find out the cause of the list. भाई डेंजरस तो है ही है ना. अगर आप कुछ नहीं करोगे तो 15 का 30 हो जाएगा, 30 का 45 हो जाएगा. या सर बिल्जिंग हुई है, फ्लडिंग हुई है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है. कुछ भी हो सकता है, कुछ तो हुआ है. So something is gone wrong. You need to check that. Yes or no? Yes, sir. It can lead to angle of Loll. Angle of Loll नहीं. It is a dangerous situation. You have to investigate. It calls for investigation. सर सबसे पहले तो साउंडिंग चालू करेंगे तो डिपार्चर कंडीशन से कंपेयर करने के लिए. तो सबसे पहले you will write the answer to this. Yes, I am in a dangerous situation. Yes, I am in a dangerous situation and I need to
investigate. And I need to investigate. So what is the first action that you will take? You will inspect all cargo holds. You are going to inspect all your cargo holds. And what are you checking for? You are checking for any General shifting. cargo crashing. So you are checking for shifting, /lashings of the cargo. You are checking for that. सबसे पहले तो ये होगा ना कि अगर कहीं मेरा कोई कार्गो शिफ्ट तो नहीं कर गया, जनरल कार्गो है, जब ये कर लिया, you will sound all liquids on board. So now you are going to sound all the liquids on board. So क्या क्या sound करोगे? सर बलास्ट टैंक्स और अपने अपने बंकर टैंक्स. So heavy oil, diesel oil, lube oil, water ballast tanks, fresh water tanks. और कुछ करोगे साउंड? सर Coffer dams void and spaces and coffer dam. Coffer dams, void spaces जो भी है। void spaces. और कुछ? चेन लॉकर सर. Chain locker. Very good. Chain locker. और कुछ? Coffer dam, void spaces, chain locker. Anything else? हो गया सारा कुछ. Okay. Bilges. So you'll sound all of this. Okay. Having sounded all this, you will calculate port and starboard distribution of weights. Right? You will calculate the port and starboard distribution of weights. Why are you doing this? You're basically trying to check whether list to nahi hai, because this will be the first indication of your list when your port and starboard distribution of weights is unequal. Having done this, you will now calculate the stability of the ship. You will calculate the stability of the ship. Having calculated the stability of the ship, you will now find that the GM is negative. So you will write down, since the GM is negative, hence vessel is at angle of Loll. So point number 6 आपका अब जाके कंक्लूड होता है कि ये जो 15 डिग्री की आपकी आई है, ये आप इसलिए आई है क्योंकि आप एंगल ऑफ लोल पे पहुंचे हो, और एंगल ऑफ लोल पे इसलिए पहुंचे हो क्योंकि आपका जीएम नेगेटिव है, जो कि आपकी कैलकुलेशंस में आया. Since GM is negative, hence vessel is at angle of Loll. ठीक है, यहां तक ओके है? किसी को कोई डाउट यहां नो तक? सर. So point number 5 क्या है सर? Point number 5 क्या है? Point number 5 है calculate the stability of the vessel. So sir, GM negative you said how sir GM negative हो गए? अरे GM नेगेटिव है. ये जो 6th point है सर, वो 6th हाँ. point हाँ तो मैंने कैलकुलेट कर, हाँ तो GM आप कैलकुलेट करोगे ना, KB करोगे, निकालोगे KB प्लस BM निकालोगे, राइट? वो उससे आपको KM मिलेगा.
ऑन बोर्ड तो आपको केएम सीधा ही मिल जाता है, आपको हाइड्रोस्टैटिक टेबल्स में डब्ल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जाते हो सीधा ही केएम मिल जाता है। यस और नो? यस सर। राइट। केजी आप वर्टिकल मोमेंट से निकालते हो, Yes, sir. तो km minus kg gives you gm solid Yes, sir. Yes. सर minus Sir, अपन minus the free surface gives you gm fluid. Yes, sir. Understood. This gm fluid is negative, therefore you've gone to an angle of Loll. Yes, sir. Yes. हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? सर अपन आंसर में ये भी कह सकते हैं ना कि सारा ये डाटा साउंडिंग वगैरह कार्गो का अपन लॉडिकेटर में डाल देंगे और फिर वहां से चेक कर लेंगे क्या है जीएम। वो सब नहीं पूछ रहा ना आपसे, ये He's not asking you लोड कहाँ डालोगे, क्या करोगे, वो ये थोड़ी पूछ रहा है कि कैसे करोगे, ये सब नहीं पूछ रहा। तो मेन पर्पस मुद्दा क्या है क्वेश्चन में, वो मुद्दे पे आओ, घूमना फिरना नहीं है। The question doesn't want you to roam around Connaught Place. Question wants you to get into the मुद्दा कि है क्या चीज But और sir, करोगे क्या। ये सर ये कंपलसरी भी तो नहीं है कि जीएम नेगेटिव हो गया है। ये क्वेश्चन It can आपको be- उसी की दिशा में लेके जा रहा है। जो क्वेश्चन है वो मेन मुद्दा है एंगल ऑफ लॉल इस क्वेश्चन का। ओके ओके सर। जैसे पिछले क्वेश्चन का मेन मुद्दा था कि वाटर लाइन पे पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, वो मुद्दा था पिछले वाले क्वेश्चन में। सो मुद्दे पे फोकस करो, ना कि इर्द गिर्द कि मैं क्या करूंगा, मैं लोडिकेटर में जाऊंगा, वो सब नहीं। दैट सर इज पिछले क्वेश्चन में तो सर वो पैरेलल था तो ऑपरेट होना चाहिए, तो बट इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है ना सर, क्योंकि इट कैन बी सेफ्टी। यहाँ पे उसने कह दिया है कि वो पैरेलल वैरेलल नहीं पूछ रहा, यहाँ पे कहता कि नहीं आप चले गए, क्यों गए और रेमेडियल एक्शन क्या लोगे और डेंजरस है कि नहीं है। सर इनिशियली इसमें जीएम नेगेटिव होगा ना, एट दैट वी हैव रिटन है वेसल विल बी एट एंगल ऑफ लोल, जीएम विल बी 0। अरे भाई तो कैलकुलेशन में तो आपका नेगेटिव आएगा ना, कैलकुलेशन में जीएम नेगेटिव Calculation में था तभी तो जहाज एंगल ऑफ लोल पे गया, तभी तो आप एंगल ऑफ लोल पे पहुंचे और फिर रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि जीएम 0 हो गया था, लेकिन आपका जीएम कैलकुलेशन में तो नेगेटिव ही रहेगा। ये सुनो, यस सर। आपका जीएम नेगेटिव था इसलिए आपका जहाज टेढ़ा घूमा और नेगेटिव और एंगल ऑफ लोल पे गया। ठीक है, इज दैट ओके? Sir, since we are concluding that vessel is at angle of Loll, our answer after sounding everything should come as GM equal to 0, no? At that particular time. नहीं भैया, नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गए, ये तो गलत हो गए। 0 तो अगर होता तो आप अपराइट रहते, उसके बाद वो नेगेटिव हो गया, उसकी वजह से आप टेढ़े हुए, उसके बाद इसकी वजह से वो बोतल गिरती है। तो आप मतलब whenever vessel will be at angle of Loll, GM will come as negative in calculation. करेक्ट, GM will not be Okay. 0 now. ठीक है। She stopped because the GM became 0. Does not mean your calculation is showing you 0. No, your calculation will show you negative only. Calculation will show sir initially when vessel was about to and going to angle of Loll, no sir, वही तो कैलकुलेट करेंगे, then it will be knowing that vessel will going to at angle of Loll. Or the vessel would have already gone to an angle of Loll also, yet your calculation with GM will be negative only. Because the GM became 0, it stopped. Doesn't mean my calculation is going to be GM equal to 0 now. No. In calculation, sir, it will never come 0 whenever angle of Correct. Loll arises. Correct. It will still be टेढ़ा, मैं जहाज से टेढ़ा ना हूं, नेगेटिव होगा।
से नेगेटिव 0.5, फिर मैंने कुछ और कंज्यूम कर दिया, then it will go to the next angle, फिर the next angle, it will keep going negative next to the next angle, बढ़ता जाएगा. Is it okay? Yes, sir. Let's stop at this. This question is not over. We'll continue on this question. Let's take a break, and I'll see you in 10-15 minutes time. ठीक है? This question is continuing. अभी ये खत्म नहीं हुआ ये question. अभी हमें remedial action लेना. Okay, let's take a break.